and I have just put Sullu here, though I'm not very regular in watching movies. I'll try to make this lecture simple and entertaining also. So this is, I'm going to present this to you. So what are these viruses? I'm just starting with basics. So viruses are something which are really tiny. बिल्कुल हम देख नहीं सकते हैं उसको अपने naked eye से. If you see this size chart, it is so small, but size really doesn't matter, and we have seen that in COVID, especially, कि it is such a tiny virus, but it has created havoc in the whole world. So viruses are something that are smaller than bacteria, and they are non-living वैसे, लेकिन when they get into humans or when they get into animals or into plants where there is a living matter, उसमें वो multiply होते हैं, and then they cause destruction, whatever. अब जो size है virus का, यहाँ पे एक size chart है कि वो 100 nanometers, which I will show you in the next slide actually, कि viruses are, जैसे अभी अपन ने human hair को अगर काटा है तो it is almost like a छोटा point, तो उससे भी 1000 times smaller are viruses. So if you see the COVID virus on the right side of the picture, where naked eye से हमको 40 microns, एक micron is something like millimeter, उसका 1000th is micron, और COVID virus है छोटा सा एक red dot. So that is the size of the viruses, where it is 1000 times less than a human hair को अपन काटते हैं. So that's why we don't see these things with our naked eye. So this is also a type of an organism. So जैसे bacteria हुआ, virus हुआ, fungus हुआ, फिर parasite हुआ, जैसे worms होते हैं, ये सब. और अगर एग्जाम्पल लें वायरस इलनेसेस के, तो जैसे HIV है, इट इज अ वायरल इलनेस. इबोला है, वायरल इलनेस है. स्मॉल पॉक्स जो अभी तो नहीं है, चिकन पॉक्स है, फिर मम्स और मीजल्स है जिसका हम ये भी लेते हैं वैक्सीनेशन. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B आपने सुना होगा. ये सारे वायरल इलनेसेस हैं. फिर डेंगू, इसी तरह चिकुनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जिका, ये सब भी वायरसेस से. these are some of the illnesses, right? So again some examples over here. Then influenza, जो हम कहते हैं वायरल इलनेस हो गया है, तो एक तो इन्फ्लुएंजा है, then there is adenovirus, and then a couple other viruses that can cause cough, cold. और उनके अलग अलग शेप्स भी होते हैं, तो वो भी दिए हैं इसमें. So coming to this, coming to dengue and चिकुनगुनिया. So हम लोग हमारी भाषा में डेंगू बोलते हैं, but it's pronounced as dengue. So let us find out what is this dengue fever, dengue illness. Okay. What are the changes in the last few years? I am just going to, like, sorry, I'm just going to. Can you see my What happened? We can. Hello. hello? Ah. Can you see my screen? Yes, we can see your screen. Okay, all right. Changes in last years. Yeah. Changes in the last years in these illnesses is that the cases have risen. Then new areas जहाँ पे पहले नहीं था dengue, chikungunya, those are seeing these illnesses. Then we have
एक्सप्लोसिव एपिडेमिक्स मतलब एक साथ बहुत सारे केसेस, एक ही जगह पे बहुत सारे. These are the changes that are being noticed in these illnesses of dengue, chikungunya. So we have to be concerned about these things. So I'm going to talk about a little bit about the history of dengue, epidemiology, pathogenesis, how it presents, symptoms क्या होते हैं, how do you diagnose, treatment क्या होता है, prevention. Treatment only, not hospital में treatment detail ऐसे. अब आप लोग समझते होंगे कि ये एपिडेमियोलॉजी और पैथोजेनेसिस जैसे वर्ड्स क्या है. So of course I'm going to explain. These are very scientific medical terms. Basically epidemiology means ये कहाँ पर है dengue and chikungunya and these diseases, and what is the number in the world, and how do they cause the illness. Okay, virus after it gets into the body, then so these are medical terms, and I purposely left it there so that I can have put this animation into it. So what's the history of dengue? It is possible that it was around for a long time, even mentioned as water poison in 260 to 400 AD. Then one thinks that even the slave trade which happened between Africa and other countries, so us time pe it moved from Africa and went into Europe and Americas. Then during World War II, जब there was a lot of movement, तभी भी spread हुआ होगा. So and then there were mentions of 18th century epidemics of dengue. What's the word dengue, or how did it come? There is something maybe from Africa, like there is a phrase called Kadinga Beppo or breakbone fever. Then there is something mentioned in Caribbean, or is it Spanish? So how did we end up with this word? It's still not certain. Then on the right side is a picture of this mosquito, and it is an article from 1920s in Australia, where they are telling what to do for cleaning up dengue. So it's been around. It is not something new. Then chikungunya, the word is so complex. This has been mentioned in 1950s. Maybe it originated from Tanzania, or maybe even earlier in 1700s. And isme chikungunya, the word is, it means contorted or bent or aise muda hua, or twisted. This is one of the Bantu languages mein. That's the meaning of this word. So this is a little bit about the history of these illnesses. Some facts and figures of dengue. About 400 million infections occur every year in the world. These are the known infections. Baki to it is probably tip of the iceberg. Ki we don't even recognize so many of the illnesses. But only about 500,000 get serious and require hospitalization. और उसमें भी ज़्यादातर बच्चे हैं of less than 5 years, and or someone with other diseases also, and usme about 2.5% of those die. So yes, there is death from these illnesses, but वैसे देखने जाए percentage wise, so it's not that much. So I'm just telling that when people hear about dengue, so they get very scared. So I wanted to tell that, say if you compare or do a percentage check, then it's not so serious. Then now the dengue virus is not just one type. There are 4 main types, और उसमें भी थोड़े बदलाव है हर एक में. So it's like type 1, type 2, type 3, type 4. And in India, we have all the types. It is said that type 1, type 2 infections are more serious, and all of them can be in one place at the same time. And we also see that अगर seroprevalence ये होता है कि अगर हमारे खून में टेस्ट करें, ठीक है, तो
शायद हमको पता भी नहीं चला होगा कि हमको डेंगू होके चला गया है, बट उसके एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में मिलेंगे। ठीक है, तो कई कई जगह पे ऑलमोस्ट 60 to 80% पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड एंड दे सी इट इन द ब्लड, उसमें देयर इज प्रूफ। एंड या सो दिस इज अबाउट डेंगू। वन मोर थिंग यू विल हियर कि एक बार डेंगू हो गया है तो सेकेंड इन्फेक्शन इज क्वाइट सीरियस। दिस इज स्पेशली इफ यू हैव first infection with dengue 1 type 1 and the second with type 2, then it can be serious. Other thing is that once you are infected with one virus, you are protected. It is thought that you're protected, or it is seen that you're protected from that virus for rest of your life, and then from the other viruses for some time of your life. एंड देन दे से कि अगर 2 बार डेंगू हो गया है 2 अलग अलग वायरस स्ट्रेन से, तो तुम पूरी लाइफ के लिए तुम प्रोटेक्टेड हो उससे। So these are some facts and figures of dengue. The number of infections by chikungunya are much less than dengue. This is a map showing where dengue is found in the world. तो जहाँ पे डार्क है, डार्क ब्लू है, वहां पे सबसे ज्यादा है। तो जैसे आप देख रहे हो कि इट्स इन इंडिया, देन एशिया, मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। So it's like a tropical disease. It looks like the mosquito also likes, and the virus likes to live in this belt more than the cold countries. So I always think that the colder countries have an advantage, not because of only because of sanitation or something, but in general they have an advantage of temperature, which sort of keeps the mosquitoes and many bacteria and parasites away, because they like garam and moist environment. तो काफी सारे illnesses Also, you have hanged. Hang take you, Setaro. No, we cannot see you. when at what stage? Now, okay, now we can see you. Now it's okay. Continue. Transmission पे है टाइगर मॉस्किटो. Sarada. Your audio video has hanged. You're on transmission page. Tiger mosquito. You're on the transmission page. Tiger mosquito, but your audio video is not there. Yeah. Yeah, now I can see you. Now I can see you. Now I can hear you. No. Okay, wait. Yeah, now I can see you and hear you. You can continue now. All right. You are at the transmission tiger mosquito. Oh. Yeah, okay. So transmission, sorry, because of this, I'm in this rural area in Chhattisgarh, so there is even having Wi-Fi for some time and electricity for some time is like a blessing. So,
ओके, सो कमिंग बैक टू ट्रांसमिशन, ये एक मच्छर की वजह से होता है, मेनली एक मच्छर का टाइप है, और उसका नाम है एडीज इजिप्टाई करके। मेन मच्छर इज एडीज इजिप्टाई, which is also called tiger mosquito because उसके पैर ऐसे striped है, तो उसको टाइगर मस्कीटो बोलते हैं। There is another मच्छर which is Aedes albopictus, which can also cause dengue, but most of the dengue cases in the cities are from this tiger mosquito, which is Aedes aegypti. Okay, same for chikungunya actually. And so this is the cycle. When a mosquito bites a person with dengue, वो mosquito के अंदर virus आ जाता है। अब वायरस तो बहुत सालों से हमारे प्लेनेट पे है, प्लेनेट अर्थ पे है, और ये साइकिल चलते रहा है। एक पर्सन को वो बाइट करता है मस्कीटो, फिर उसके अंदर वायरस आ जाता है, फिर इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द वायरस टू गो फ्रॉम द intestine to the salivary gland, mouth parts, again back to the mosquito, and then the mosquito goes and bites either the same person again or it bites other people. अब एडीज इजिप्टाई मस्कीटो ऐसा है कि वो उसकी भूख मिटती नहीं है जल्दी, so it keeps trying to bite more people, tries to bite the same person. तो जितनी बार वो bite करता है उतनी बार it vomits out the virus, and उतनी बार वो infection it can give the person. So imagine एक ही घर में बहुत सारे लोग हैं, तो एक जन को अगर डेंगू है तो वो मस्कीटो बाइट करेगा, and then it will go and bite another person in the same house and then come back to the first person, keep going around till it finishes drinking blood it wants. It's a female mosquito, and then, and see, there is nothing wrong in this because the female mosquito is trying to get all this nutrition and energy for its bachas. So as dengue फैलता, so wherever there is crowding, ज्यादा लोगों को ये infection हो सकता है, और फिर the mosquito lives with the virus till the mosquito dies. अगर 2 हफ्ते का उसका लाइफ स्पैन है मस्कीटो का, तो it will have that virus in it for 2 weeks, and it will keep infecting people. So there is some bad news कि ये Aedes aegypti, Aedes albopictus, other than dengue, the same mosquito can also spread Zika, the same can spread chikungunya, and in parts like in Africa and South America there is yellow fever. So ये yellow fever भी spread कर सकता है, and yellow fever can be a life-threatening illness. So agar things change, agar temperatures change and there is more travel, we can probably get yellow fever at some point in our life, you know. It's just a matter of time and some small changes in the environment where we can see new infections. All right, so some of the factors are like mosquito density. जहाँ बहुत सारे मच्छर हो तो obviously you are increasing the chance of getting infected mosquitoes. Then if there is poor urban planning, बहुत सारे भीड़ वाली जगह, बहुत पास पास में घर बनाए हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं उधर, और अभी तो this is encroaching the rural areas also where there is थोड़े हट के अलग अलग घर है, लेकिन pretty soon there will be overcrowding in and encroachment in these areas also. Poor sanitation, we will see some examples in the next slides. Then modern ways of transportation and faster transportation. We have seen no better example than this in COVID times, where COVID spread within such a short time to different parts of the world, right? So because of this transportation, how these infections spread so fast to different parts of the world. And same, like if with humans, the infection also goes साथ mein, mosquitoes travel with us and the virus travels with us, and even same for other infections also. Temperature changes. So usually this mosquito likes to stay, as I showed you in the map,
कि there is a belt, tropical belt, जहाँ पे certain viruses, mosquitoes like to live. थोड़ा बहुत that is 16 to 30 degrees and height भी नहीं, ज्यादा height भी नहीं. आप हिमालय के उसके पीक पे जाओगे तो आपको डेंगू नहीं मिलेगा. So there is a height and a temperature which these mosquitoes survive in. थोड़ा भी उसमें चेंज हो गया, अगर टेम्परेचर इनफैक्ट ज्यादा बढ़ गया 2 डिग्री, तो mosquitoes feel dehydrated and they want to drink more blood. So you can imagine that behavior of mosquitoes. So a lot of it depends on our behavior, human behavior, which, you know, रोज हमको सोचना चाहिए how much we how we consume the environment and what changes we are doing which is causing such infections. So let's see. हमको लगता है कि plastic waste and there is no connection of plastic waste and mosquitoes. So there are wrappers. We eat some chips का पैकेट हमने ऐसे ही फेंक दिया रास्ते में, या फिर चॉकलेट खाई तो कार का विंडो स्क्रीन डाउन करके उसको फेंक दिया रैपर को. Then we have collections of water in pots and pans and broken like tires या कुछ भी टूटा फूटा. So it's all about water actually. So, and how much water is enough? So let's see, there was a study in Telangana where they found that locked homes, फिर construction sites में कुछ कुछ थोड़ा बहुत पानी जमा रहता है. They found that there were 16,000 locked homes, 10,000 construction sites, basement some 3,500, and there was a study done by someone who is an expert in insects and all, and they found if one house remains locked for 1 week, and it is enough to breed mosquitoes which can affect half-kilometer range around that house. So that is the extent of damage it can do. Basically, what I want to say that it really does not require a lot for mosquitoes to multiply. So even if there is one little water in a cup or a spoon or a plastic wrapper or a thrown bottle, it is enough for giving birth to 200 mosquitoes from that. So we have to be really conscious of our surroundings और कहाँ पे हम पानी जमा होने देते हैं. Okay, so these were things about the environment, but there is something which can make it serious in the humans also, like extremes of age. We have already seen that जो बच्चे हैं वो ज़्यादा affect हो जाते हैं. Then if there are women and children at home, obviously अगर the woman is a housewife and children are small, they are not going out, so they remain at home. And remember that this dengue mosquito Aedes is a day biter and it's indoors. ठीक है, so दिन में वो बाइट करता है, रात में नहीं. हम रात को 6 बजे के बाद दरवाजा सब बंद करेंगे तो फायदा नहीं है, वो अपना काम करके चला गया होगा दिन में. Then we have people who are obese. Again, all these factors which we are talking about are risk factors even for other diseases, not just dengue and chikungunya or other. Sabhi diseases ke liye, it is not good to be very young or very old. It is not good to be obese. Pregnancy is another risk factor. One has to be careful. Then because dengue may there is a chance of bleeding. Some people who have severe dengue. So those with gastric ulcer or certain blood disorders, या फिर बहुत सालों से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या पेन किलर्स जैसे ब्रूफेन वगैरह, उनको ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा है. जिनको हार्ट डिजीजेस होते हैं, फिर जिनको डायबिटीज, अस्थमा, रीनल, किडनी की प्रॉब्लम या लिवर की प्रॉब्लम, obviously these are again for any other disorder. And this is very obvious कि जो अपाहिज है, disabled है, जो mentally challenged है, जो अकेले रहते हैं, उनको तो कोई भी बीमारी उनके लिए it is going to be a problem and challenging.
So these are some of the human factors which can make the disease more worse. What is the pathogenesis means that how does the virus cause the infection? So one is the direct, कुछ जहर जैसे बोलते हैं, toxins बोलते हैं, ऐसे either it can be that damage, then it can be a damage जैसे virus आ गया. अभी आप कुछ लोगों ने सुना होगा cytokine storm in COVID. So where the virus enters the body and the body thinks that oh there is some enemy, शत्रु, उसको फाइट करना है, तो बॉडी अपनी पूरी ताकत लगा के फाइट करता है. लेकिन उसके साथ साथ हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज होते हैं, टिश्यूज डैमेज होते हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द इफेक्ट्स, अनवांटेड साइड इफेक्ट्स. सो सम ऑफ द डिजीज manifestations are because of the unwanted side effects of the body itself. Then I was telling that second time when you get dengue, it is more severe. That's a complex phenomenon. I don't want to talk about it. It's called antibody dependent enhancement. But so basically there is, एक साथ बहुत कुछ होने लगता है, pretty much like COVID का, cytokine storm and immune mediated reaction, and काफी सारा डैमेज होता है, cells को डैमेज होता है, platelets को डैमेज होता है, जहाँ प्लेटलेट्स बनते हैं, सेल्स बनते हैं, वहां पे डैमेज होता है. तो एक साथ बहुत कुछ हो रहा होता है. दैट इज हाउ द डिजीज मैनिफेस्ट्स. एंड even fever, for example, is a side effect of the body trying to fight the infection. Okay, so how does a patient present? You all know it can be absolutely mild, पता भी नहीं चलेगा कि डेंगू होके चला गया है, or they can be very severe cases. There could be fever for 3 to 7 days. It's more in children. Sometimes you'll have 2 episodes of fever. You can have various types of pains, headache, pain in the eyes, body ache, muscles, joints, पेट में दर्द. फिर स्टमक या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में you can have nausea, vomiting, diarrhea. फिर एक तरह का रैश भी हो सकता है, जैसे फीवर के साथ रैश होता है और फीवर के बाद भी एक रैश होता है, और पूरे बॉडी में खुजली भी हो सकती है, इचिंग. यू मे हैव समवन मे स्टार्ट विथ कॉफ एंड गले में खिचखिचाहट या सर्दी, किसी को डिप्रेशन हो सकता है, कुछ गांठें बड़ी हो सकती हैं. सो इट कैन बी अ वेराइटी ऑफ सिम्टम्स. एज आई सेड, मोस्ट ऑफ देम आर माइल्ड और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसके लिए डरने की बात नहीं है. Imagine out of like 400 million cases per year, there are roughly 100 million that are symptomatic. Symptomatic means it can be mild also, जरूरी नहीं है severe उसमें. So rash जैसा है, तो ये पहले वाले फोटो में जैसे हम थप्पड़ मारते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि 4-5 उंगली के निशान होने चाहिए, वो ऐसे उल्टा होता है इसमें कि सफेद हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज वेरी फ्लश्ड, और ब्लड के बीच में ऐसे सफेद तुमको पंजे ऐसे दिखेंगे. एडल्ट में भी यू में सी दाने 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 दाने. ऑफ कोर्स इट आल्सो डिपेंड्स ऑन बॉडी का कलर, लाइक on my skin you may not see this kind of a rash. Then and most of the pictures actually in the textbooks are from फॉरेन कंट्रीज. तो बहुत ही क्लासिक सब दिखता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि स्किन हर एक स्किन टाइप में दिखेगा. देयर इज अनदर रैश which is called white islands in the sea of red, where you have छोटे छोटे white दाने. This is towards the end of the illness. Just showing this for ऐसे कुछ जरूरी नहीं है ये हो, it's just details of this. So dengue में there are 3 phases. One is the fever phase, which comes after mosquito ने bite किया, उसके 7-8 दिन के बाद you have an onset of fever, and that fever can be कोई लोगों को एक ही दिन होता है, कुछ लोगों को 7 दिन भी रह सकता है, और फिर एक critical phase है जहाँ पे serious होने की संभावना है, where you may become serious, but you don't have to be serious. Okay, that is about in 2 days, and then automatic recovery phase हो जाता है. In this critical phase or serious phase, अपने प्लेटलेट्स ड्रॉप होते जाएंगे, डिहाइड्रेशन होगा बॉडी के अंदर, कुछ कुछ
बदलाव आते हैं उसमें, दैट इज वेयर वन हैज टू बी केयरफुल. So when do you worry in cases of dengue? When during the fever phase, ऐसे बहुत पेट continuously पेट दर्द हो रहा है, continuous vomiting हो रहा है, कहीं कहीं से bleeding हो रहा है, या you feel extremely weak and restless, या तुम्हारे दिमाग का कोई there is no, you feel lost, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, then when you examine, a doctor examines, finds the liver is enlarged or there is some fluid accumulation from stethoscope से सुन के, या the person is not conscious, ये सब चीजें हैं, that's when you have to worry. And then in the lab test, if there is a rapid fall in platelets, less than 1 lakh rapidly, वैसे तो up to 10,000 platelets also, no need to give platelet transfusion. But if there's a rapid fall, आज किया टेस्ट और 2 दिन के बाद किया और एकदम घटने लगा, और दूसरा भी एक लैब टेस्ट है, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड, जब ब्लड गाढ़ा होते जाता है तब ये सब वरिंग सिम्टम्स है. सो हाउ डू यू डायग्नोस अ केस ऑफ डेंगू? अगर बहुत सारे आसपास लोगों को डेंगू हो रहा है, तुम भी उसी घर में हो, तो ऑब्वियसली you don't have to get everyone tested and you can say okay you have dengue and just watch out for the worrying symptoms. अभी ज्यादातर लोगों को पीसीआर आफ्टर कोविड तो पता चल गया है व्हाट इज पीसीआर. इट इज लाइक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वायरस, उसको डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, and it is used extensively now throughout the world in many parts, in urban setups, usually bigger labs. So you look for the genetic component. Each virus is either made of RNA or DNA, और उसको डिटेक्ट करना बाय पीसीआर, या फिर वायरस का एक पार्ट होता है NS1 विच इज नॉन, एक प्रोटीन पार्ट होता है वायरस का, उसका डिटेक्ट करना, या फिर एंटीबॉडीज जो वायरस बैक्टीरिया जो भी है उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी मेक्स, द इम्यून सिस्टम मेक्स अ केमिकल कॉल्ड, बायोकेमिकल कॉल्ड एज एंटीबॉडी, उसका डिटेक्शन, या फिर WBC काउंट लो हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है, या फिर ब्लड गाढ़ा हो जाता है. रेयरली वन नीड्स लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे अनलेस इट इज कंफ्यूजिंग कि क्या है भाई समझ नहीं आ रहा है. एंड एज आई सेड, आजकल चिकुनगुनिया भी चल रहा है, कई कई जगह पे मलेरिया भी है. इफ यू गो टू रूरल एरियाज देयर इज वन मोर couple more things like scrub typhus है. All these also one has to keep in mind. This is more for the doctor or the physician to keep in mind कि शायद दोनों इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और ऐसे हो रहा है कि लोगों को चिकुनगुनिया और डेंगू साथ में हुआ है. The good news is that even if you have these two, the good news is that there is no medicine for this. ऐसा नहीं है कि you're missing out on something. There is no antiviral medication. You just have to wait it out and say कि okay ठीक होगा, पानी पीते रहो, पैरासिटामोल लेते रहो, and अपने आप ये ठीक हो जाएंगे. चिकुनगुनिया सिमिलर टू डेंगू, हेडेक, रैश, ये सब, बट वो सिवियर फेज नहीं है उसमें जो डेंगू में हो सकता है. Another difference is that चिकुनगुनिया में जॉइंट पेन बहुत होता है. People who have had chikungunya can tell you how painful it is, and unfortunately that pain can go on for months to years. Again, this is the reason is that virus enters the body tries to fight it in some way, in that it causes damage to various parts of the body including the joint के tissues वगैरह. Then there is rash, आंखों में conjunctivitis जैसे लाल लाल हो जाएगा. But the good news in chikungunya is that it doesn't really cause death as it can cause in dengue in some cases. Diagnosis is, the patient presents with certain features or antibody test or PCR. So this is just a chart showing, see how common it can be. Fever can be in both. Fever can be in all these illnesses I've mentioned at the bottom: malaria, typhoid, lepto, flu, hepatitis, sepsis. कहीं Zika चल रहा होगा, कहीं येलो फीवर चल रहा होगा. कुछ कुछ चीजें, जॉइंट पेन जैसे चिकुनगुनिया ज्यादा है, फिर रैश ज्यादा है चिकुनगुनिया में, ऐसे सब.
but again this is not for us. Good news is that डेंगू एंड चिकनगुनिया के लिए कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है. तो अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो या किसी ने दिया है आपको इसके लिए तो वो बिल्कुल गलत है. Alright, so treatment is, unless there is nothing else, unless you are not in the vulnerable or risk factor type age like old age, diabetes, kidney, liver disease and all these, the treatment is quite simple. You keep drinking fluids and see that you're passing urine every 6 hours, and the urine should be, you know, light yellow in color. That should be in your mind कि एकदम dark yellow नहीं होना चाहिए urine. उतना पानी पीना चाहिए हमको. For fever and aches, take paracetamol. अगर 60 किलो से ऊपर है तो 2 पैरासिटामोल की गोली लो हर 6 घंटे. अगर 60 से कम तो 1 पैरासिटामोल की गोली. पैरासिटामोल से काम नहीं बन रहा है तो ब्रूफेन भी ले सकते हैं या फिर उसको अल्टरनेट कर सकते हैं. बट नो नीड टू वरी मोर देन ऑल दिस. को कुछ प्लीज डोंट एंड अप टेकिंग एनी अदर मेडिसिन्स एंड कीप रिव्यूइंग फॉर दोज वरिंग साइंस जैसे वॉमिटिंग, ब्लीडिंग and stomach ache and all that. Okay, those are the things you have to keep looking. And then you take complete rest and eat good food. Good food is important for everything, not just these two illnesses but for almost everything. There is no need to take special food, there is no need to take special vitamins. Okay, don't spend money on vitamins. In fact, someone was telling that buying vitamins, multivitamins, B complex is just making एक्सपेंसिव सुसु एंड पॉटी. सच में, क्योंकि जितना हमको खाने में मिलता है उससे ज्यादा हम अगर विटामिन्स लेंगे तो वो हमारे वो निकल जाता है सुसु और उसमें टॉयलेट में. तो डोंट वेस्ट मनी ऑन गेटिंग दीज थिंग्स. Another thing is about this dragon fruit, kiwi fruit, papaya, leaf extract, ये सब भी. I have told you that automatically these illnesses they'll start becoming okay even without eating these things. So the studies also which say that person has gotten better with eating papaya leaves or dragon fruit or kiwi fruit, you really cannot prove it because automatically the disease is going to get better. So you can't really prove that it is because of this that the person got better. Okay, so please try not to get scared or fear anything and start spending a lot of money on these things. अच्छा खाना खाओ, fruit खाओ जो normally खाते हो, and even for the long run. And the platelet count, as I've said, unless it's dropping to less than 20,000, there's nothing to worry. So even if you see your platelet count going down to say 150,000 एक दिन, 120,000 एक दिन, if nothing is, वो warning signs अगर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, तो don't get panicky and start buying all these things. ये किसी और का ही फायदा हो रहा है ये सब खरीदने में, अपना तो नहीं हो रहा है, अपना मेंटल हालत और बिगड़ती जाती है. So prevention is mainly prevention of getting bitten by mosquitoes. There are various things like cover all the containers which have water. या तो पानी उसको जमने ही नहीं दो. इंसेक्टिसाइड्स यूज करो. फिर कहीं कहीं पे लोग छोटे छोटे मछली डालते हैं पानी में. इफ यू हैव अ फाउंटेन और समथिंग, तो देयर आर सम स्मॉल फिश दैट ईट द मस्कीटो लार्वा. Then remember, every time you throw a plastic piece or a wrapper of something, then you are putting something in the environment which can collect water in which the mosquito can lay eggs. So be clean, even at home and even outside the home. For yourself, you apply repellents, either it is neem oil or citronella or odomus or whatever works, permethrin, DEET. And then wear long sleeve clothing, have mosquito traps, use bed net. Bed net is a very effective way of keeping mosquitoes off. So use bed net, close your windows. Again, as I say, this Aedes mosquito, Aedes aegypti, dengue, chikungunya mosquito, these are day biters. तो दिन भर आप खुला रखोगे, शाम को बंद करोगे सोच के कि मस्कीटो नहीं आएगा, वो वहीं रहता है, घर में रहता है. तो इसके लिए
this is okay for malaria, but Aedes mosquitoes, you'll have to do something inside the house 24 hours. You can have repellents, all that. And then mesh वगैरह डलवाना है घरों में, ठीक है, या even fogging with neem. So it's basically all about keeping the mosquitoes out and also about the water collection. Okay, last week was Lata Mangeshkar's birthday when I was to do this. So I tried to put an audio clip of Pani Pani Re, but I couldn't. But anyway, so remember mosquitoes and water are something you have to be careful about. Now, what about fogging jo chalta hai? I'll be done in about 5 minutes since we started late. So fogging जो है, जो हम देखते रहते हैं बाहर, so this fogging is again good for outdoors. घर के अंदर तो वो उसका कोई काम नहीं है. घर के अंदर जो डेंगू मस्किटो रहता है वो बाहर के फॉगिंग से उसको फर्क नहीं पड़ता है. Just remember that. Don't be happy with this fogging. It's good, okay, for malaria mosquitoes, but you have to do your bit for the dengue, chikungunya mosquitoes also. There are a couple of vaccines. In fact, today or yesterday, WHO announced malaria vaccine. The dengue vaccine, it's difficult, it's a bit complicated because when there were studies done in Philippines, there were some very serious side effects and children died also from dengue vaccine. So it's only restricted to certain countries and certain age groups. It's not for everyone. And it also depends on whether you've had dengue before or not. नहीं तो उसमें बहुत severe side effect भी हो सकता है. So there is one more thing that is happening, which is ये 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट campaign in some parts of India, which is every week एक बार 10 मिनट के लिए अपने घरों में जाके देखना है कि कहाँ कहाँ पानी जमा हुआ है कि नहीं, उसको फेंको, स्क्रीन मैश वगैरह सब देखते जाओ. So this is like a health awareness and prevention campaign in couple of states in India. Actually. All right, so that was the end of my presentation, but as this picture says कि picture abhi baki hai, this is mainly for COVID. So let us not forget COVID, and while we are into COVID, let us not forget the other diseases. Don't forget hand washing, and I keep telling people कि hand washing is going to help you in other diarrheal diseases also, and not just for COVID and other viral illnesses. Similarly, mask, if you get into the habit of wearing mask, it is not only good for COVID, but there are studies proving repeatedly कि other respiratory infections भी कम होते हैं. आप सोचो dust, smoke, वो सब भी कम जाता है हमारे lungs में, और फिर हम बार बार अपने नाक और मुंह में हाथ उंगली नहीं डालेंगे मास्क के कारण, थूकेंगे नहीं मास्क के कारण. So mask has multiple advantages, not just for COVID. Similarly, vaccine is also good because it reduces the severity of infection of COVID. So I just want to end with this, that do not forget COVID, and in the wake of COVID, do not forget the other diseases and what we can. So that's about it. Thank you, everyone. And if there are, if there is time, question answers. If anybody would like to ask any questions, or you can write in the chat box any question. I don't think anybody wants any. I think your presentation was pretty much clear. So yeah, thank okay, you so much. And anyone go ahead and ask questions. Anybody wants to ask questions? Hello. And they can Okay. even give comments on. Or anybody would like to give any comments? Okay, I don't think everybody is okay. Okay, then maybe we'll end the session now. And
Uh, I think Kamlesh Pandey has risen his hand. okay, he's written. Okay, please go ahead, Kamlesh. Unmute your mic. Or you Kamlesh, can unmute your mic. Or type a question. इसको बोला ना बेटा अपना और हिंदी गुजराती दोनों में चलेगा. So there is no restriction. Yeah. Tamil, Hindi, Gujarati, English. These languages are fine. So अच्छा, people Kamlesh, you can can ask go a ahead. question. नमस्कार मैम. Kamlesh Pandey, नमस्कार please सर. ask a बोलिए. question. जी मैम, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा हाँ बोल. जानकारी हाँ, मिली. कंफ्यूजन थे वो सब भी क्लियर हुई. रिसेंटली मुझे ही चिकनगुनिया हुआ है और मुझे सीवियर पेन है एंकल में. और मतलब हाँ. उसका सिम्टम ऐसा हो रहा है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग टू दोपहर तक बहुत ज्यादा रहता है. मतलब हाँ. हाँ. उसके बाद थोड़ा सा क्या नॉर्मल फील करते तो हैं. हाँ ठीक है. तो आपको कब हुआ था कमलेश जी ये? 13th को डिटेक्ट हुआ था. 13th ऑफ अच्छा, सितंबर. और मैं हाँ. 5-6 दिन में मैं बिल्कुल फिट हो गया. मतलब फीवर वीवर चला गया सब कुछ. हाँ. लेकिन वापस ज्वाइंट हाँ. में आना शुरू हुआ उसके 2-3 दिन बाद से. ठीक है. हाँ. हाँ. और ऐसे तो ज्वाइंट में सारे जगह पे थोड़ा थोड़ा पेन है लेकिन वो उतना नहीं है. लेकिन एक एंकल में बहुत ज्यादा पेन है. उसकी वजह से क्या मैं अच्छा. चलने फिरने तो में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. हाँ, तो कमलेश जी जैसे मैंने बताया कि इसमें ना 3-6 महीने तक कुछ लोगों को जॉइंट पेन बहुत ज्यादा रह सकता है. तो आपको ये मान के चलना होगा कि आपको और 3 से 6 महीने तक ऐसे हो सकता है. और अगर सूजन है या बुखार वगैरह है और लाल लाल हो जाता है तो आपको फिर जाना पड़ेगा. लेकिन अभी अभी आपको ये हुआ है चिकनगुनिया, इसके लिए ये जैसे मैंने कहा 3 से 6 महीने तक ये हो सकता है, रह सकता है. आपको थोड़ा मन बना के रखना पड़ेगा. आपको जो पैरासिटामोल है या ब्रूफेन है, ज्यादातर पैरासिटामोल का इस्तेमाल करिए. और फिर अगर आपको गरम इसका सेक ठीक लगे तो वो भी ट्राई करना आप. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये रह सकता है कुछ और टाइम के लिए. धीरे धीरे वो कम होता है. हाँ मैडम. और वो जो मतलब एंकल से ऊपर की तरफ जो उसमें हड्डी है ज्वाइंट वाली, उसमें भी थोड़ा एबनॉर्मेलिटी फील होती है. मतलब हाँ. अजीब लगता है. थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल पैर. लगता है हाँ. जैसे उसको हाँ. सहलाएं या फिर उसको एकदम शांत रखें, ऐसा फील होता है. हाँ. हाँ, ऐसे होता है. लेकिन जैसे आपका तो अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ ओके मैम. है ना? ओके मैम. थैंक यू. थैंक यू. हाँ. और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा मैम. थोड़ी सी Anyone else हुई, has लेकिन a मैं वेट question? करता रहा क्योंकि मैं अभी खुद इसको झेल रहा हूँ और बहुत सारी जानकारी मिली. और हाँ. स्पेशली थैंक यू मैम. हाँ. थैंक यू. थैंक यू. हाँ. Thank you, Kamlesh ji. Or anybody would like to ask any questions? Any questions or comments? Ji? May anyway. Anybody? Yeah. Okay. So we can end? Huh? Yeah. Thank you everyone again for listening in. So thank you so much, Dr. Vasundhara, and hopefully we will have you again for something else, some other new topic. Yeah. And Yeah. it was very nice listening to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Thanks a lot.
Bye. Bye bye. Yeah.